Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to complete the remaining part of DNA. So let's move to the whiteboard. So DNA, we were discussing DNA. That is a very lengthy topic, but we have to make the clear-cut concepts. That is deoxyribonucleic acid. Clear? So in the previous lecture, we have studied some basic concepts regarding the DNA. Dear students, at page number 32 in our book, there is given a list of ribonucleotides and the deoxyribonucleotides, as well as the ribonucleosides, as well as the deoxyribonucleosides. Clear? तो वो लिस्ट जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपने लिस्ट एज इट इज बनानी है, ठीक है, at the page number 32 in the topic of DNA. So here is the list of nucleosides and nucleotides in DNA and RNA. Clear? So that is important to know. So in that very fashion, we will move on. RNA, and here we will discuss the DNA. Clear? And the nucleosides and its nucleotides. Clear? And now the next portion we will discuss about the nucleosides and over here the nucleotide. But of DNA. Clear? Right here. And here we will mention the nitrogenous bases in this column. Clear? So, first of all, to dear students, what is nucleoside? हम पहले पढ़ चुके previous lecture में डिटेल के साथ. Yes, what is nucleoside? Nitrogenous base plus sugar, that is nucleoside. And what is nucleotide? Nucleoside plus phosphate, that is the nucleotide. So hopefully यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको दोबारा से इसके नीचे मेंशन नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने इसको साथ में orally आपको बता दिया. और आपने अब मुझे साथ साथ ही इन्फॉर्म करना है कि आंसर्स मुझे करते जाने हैं
कि न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगी उस नाइट्रोजनस बेस से और न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सी बनेगी. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल adenine. The nitrogenous base, we start from purines, the double-ringed nitrogenous bases. The first one is adenine. तो इसकी न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगी डियर स्टूडेंट्स? जब ये शुगर के साथ मिलेगी तो क्या बनेगी? हमने पढ़ा था that becomes adenosine. Adenosine. That is the nucleoside. Clear? और nucleotides क्या बनेगी? In case of RNA, it is AMP, adenosine monophosphate, ADP, adenosine diphosphate, and ATP, adenosine triphosphate. Clear? As far as DNA is concerned, तो ये वाली नाइट्रोजनस बेस डीएनए में न्यूक्लियोसाइड कौन सी बनाएगी डियर स्टूडेंट्स? इट विल बिकम डीऑक्सी एडिनोसिन. क्लियर? डीऑक्सी एडिनोसिन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए, और डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोसाइड में जो शुगर है दैट इज डीऑक्सी. सो दैट इज द रीजन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे ये डिस्कस किया था कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स कौन सी होंगी? डीऑक्सी. क्लियर? इट इज डीऑक्सी एडिनोसिन. इसी तरह से इसमें न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन सी बनेगी? डीऑक्सी एएमपी, डीऑक्सी एडीपी, adenosine diphosphate, and deoxy ATP. Is that clear? Now, the next one is guanine. जी स्टूडेंट्स, तो गुआनिन की न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगी आरएनए में? यस, शाबाश. दैट इज guanosine. It is guanosine. Clear? और आरएनए में इसकी न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन सी बन सकती हैं? guanosine monophosphate GMP, guanosine diphosphate GDP, and guanosine triphosphate, that is GTP. Is that clear? और इसी तरह से डीएनए के अंदर गुआनिन की न्यूक्लियोसाइड कौन सी बनेगी? यस डियर स्टूडेंट्स, सो डीएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सी. सो इट्स न्यूक्लियोसाइड विल बिकम डीऑक्सी. स्मॉल d is representing the deoxy as I told you in the previous lecture. So deoxy guanosine is the nucleoside in DNA, and its nucleotides क्या बनने चाहिए dear students? Deoxy guanosine monophosphate, deoxy guanosine diphosphate, and deoxy guanosine triphosphate. Is that clear? तो ये दो नाइट्रोजनस बेसिस हो गई. Now the third one. अब हम आते हैं pyrimidines की तरफ. They were purines, the double-ringed nitrogenous bases. Now it is cytosine. Clear? तो dear students, cytosine की बेस न्यूक्लियोसाइड कौन सी बनेगी? Yes. So it is cytidine. Cytidine. Clear? और आरएनए में इसकी न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन सी बन सकती हैं? cytidine monophosphate, cytidine diphosphate, and cytidine triphosphate. Clear? And in case of DNA, जी शाबाश, कौन सी बनेगी न्यूक्लियोसाइड साइटोसिन की? डीऑक्सीसाइटिडीन. क्लियर? और इसकी न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन सी बन सकती हैं? दैट इज डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट CMP, deoxycytidine diphosphate, clear, and finally deoxycytidine triphosphate CTP. clear? अब बहुत सोच समझ के आंसर करना है, बहुत सोच समझ के. The next one is uracil.
इसके हवाले से टोटल बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। यूरासिल, तो यूरासिल डियर स्टूडेंट्स, आरएनए में कौन सी न्यूक्लियोसाइड बनेगी इसकी? दैट इज यूरिडीन, शाबाश, दैट इज यूरिडीन। और आरएनए में इसकी न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन सी बनेंगी? यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट एंड यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं डीएनए में। तो डीएनए में यूरासिल की न्यूक्लियोसाइड कौन सी बनेगी? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा। यस, तो जो स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यहां पर डीएनए में यूरासिल की कौन सी बनेगी? डीऑक्सीयूरिडीन, सो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. You are absolutely wrong because uracil is present only in RNA. Clear? It is present only in RNA. आपको बताया था। तो डीएनए में इसकी कोई न्यूक्लियोसाइड नहीं बनेगी, कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगी। Clear? So that is a little bit tricky. Now, again, another tricky question. अब गौर से सुनना है और आंसर करना है। The fifth one is thymine, the fifth nitrogenous base. जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आंसर मी कि आरएनए में इसकी कौन सी न्यूक्लियोसाइड बनेगी? यस, तो जो स्टूडेंट जिनके दिमाग में ये आया, जिन्होंने ये सोचा या जिनका आंसर ये है कि यहाँ पर बनेगी थाइमिडीन और यहाँ पर बनेगी टीएमपी, टीडीपी एंड टीटीपी, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. They are absolutely wrong. The reason is that thymine, it is only present in DNA. तो इसकी न्यूक्लियोसाइड भी डीएनए में बनेगी और न्यूक्लियोटाइड भी इधर डीएनए में बनेगी, जैसा कि यूरासिल सिर्फ आरएनए में थी. क्लियर? सो इन डीएनए thymine forms deoxythymidine. क्लियर? और इसी तरह से इसकी न्यूक्लियोटाइड्स क्या बनेगी? डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन डाइफॉस्फेट एंड डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, TTP. Is that clear? So dear students, now moving on. In 1951, in 1951, in 1951, there was a scientist by the name of Erwin Chargaff. Erwin Chargaff. Clear? MCQ. Clear? ये दो MCQs हैं. In 1951, Erwin Chargaff. Chargaff, which gave this idea, जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, about the nitrogenous basis, that was in 1951. So remember this point. It is very, very important MCQ. So in 1951, Erwin Chargaff provided the data about the ratio of nitrogenous bases in DNA. Clear? कि एक DNA के अंदर कितनी नाइट्रोजनस बेसिस मीन्स के उनका जो रेशियो होती है वो कितनी होती है. क्लियर? सो दैट वाज व्हाट ही डिस्कवर्ड. क्लियर? कि अर्विन शार्गफ ने 1951 में ये बताया, ये एक डाटा हमें प्रोवाइड किया, एक इंफॉर्मेशन शेयर की हमसे आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क, दैट इन अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल कितनी नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं वो रेशियो में मौजूद होती हैं और उसकी में परसेंटेज में बात की गई. क्लियर? सो ही टोल्ड that the ratio
of adenine is approximately equal to the ratio of thymine. Clear? And also, he provided that the ratio of guanine is approximately equal to the ratio of cytosine. Clear? और ये सारी जो information हमसे share की थी, that is also given in a tabulated form in our book at page number 32. The relative amount of bases in DNA of various organisms on percentage basis. Clear? Percentage basis के ऊपर उन्होंने ये data जो है वो provide किया. And what was that data? The various organisms. So here we go. Here are the organisms. And first of all, adenine, its ratio is compared with the thymine. Then the ratio of guanine, the purine nitrogenous base, with cytosine. Clear? Over here. Now, first of all, the various organisms in which its percentage was given, the first one is man. Then is sheep. Then is wheat, gandum. Clear? And the fourth one is yeast, the unicellular fungus. इन 4 different organisms के अंदर इनके जो ratios हैं उनको compare किया गया. So he found that in man, the ratio is just like this: 30.9, sheep 29.3, wheat 27.3, and yeast 31.3. Clear? As far as its the counterpart, that is thymine, adenine with thymine, it is 29.4, and sheep it is 28.3, and in wheat it is 27.1, and in yeast it is 32.9.
Now, in the ratio of guanine and cytosine, 19, 21, 22, and 18. And in case of cytosine, it is 19 and 21 and 22 and 17. Clear? So in man, the guanine is present in 19.9, while in sheep it is 21.4, while in wheat it is 22.7, while in yeast it is 18.7, while in cytosine, in the man, cytosine is 19.8, in sheep it is 21.0, in wheat it is 22.8, and in yeast it is 17.1. As you can see over here, आप देख सकते हैं कि पहले मैन की बात कर लें. एडेनिन और थायमिन, अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे इन रेशियो फॉर्म 30-30, क्लियर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल. हमने बात की थी अप्रोक्सीमेटली दे आर इक्वल. 30 अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, कोशिश करेंगे, इट इज 30, तो अप्रोक्सीमेटली, यानी कि नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली. इन शीप यहाँ पे देख सकते हैं एडेनिन थायमिन 29 एंड 28.3. यहाँ पर वीट में देख सकते हैं 27.3 एंड 27.1. यीस्ट में देख सकते हैं 31.3 एंड 32.9. सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल. कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस इक्वल है? एडेनिन थायमिन के इक्वल. इस तरह से guanine और cytosine, the second point, the ratio of guanine is approximately equal to the ratio of cytosine. तो humans के अंदर देखिए, man के अंदर guanine is 19.9, while in the cytosine it is 19.8. In sheep it is 21.4, while it is the cytosine is 21.0. In wheat it is 22.7 and cytosine is 22.8, approximately equal, approximately equal, approximately equal. And finally the yeast, it is 18.7 guanine and 17.1 the cytosine, so approximately equal. If we give them in ratio forms, so they become equalized. Clear? So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.